क्वार्टेलियन भारत इंडिया फरीदाबाद 430 सेक्टर 21B 98106107 your service to to consider to have some discussion मस्तिष्क की शक्ति आत्मा की शक्ति पावर ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ सोल वेरी सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट फॉर एवरीबॉडी आत्मा की शक्ति और मस्तिष्क की शक्ति क्या होती है सबके लिए उसके बारे में कुछ निर्णय करना कुछ सोचना समझना विश्वास करना नहीं करना यह आपके हाथ में है सबके हाथ में है हाउ टू कंसिडर योर माइंड हाउ टू कंसिडर योर बॉडी एंड हाउ टू कंसिडर सोल आप अपने मस्तिष्क को क्या समझते हैं अपनी आत्मा को क्या समझते हैं अपने अपने काम करने के तरीके को क्या समझते हैं कितना लेना चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं यह आपको सोचना है your property you have to use though it is not absolute property but it is a relative property means it has been given to you by someone and that someone is sitting there in the skies to whom you whatever call that power of this universe वो शक्ति इस ब्रह्मांड की जो वहाँ बैठी है जो हम नहीं जानते कहाँ बैठी लेकिन हमारे साथ बैठी है हमें दिखती नहीं हम फील करते हैं लेकिन हम पकड़ नहीं सकते वो शक्ति मेरे पास भी है आपके पास भी है सबके पास भी है हमारे देश में तो कहा जाता है पत्ते पत्ते हिल नहीं सकते अगर वो शक्ति ना हो तो ये सच बात है नो लीव और नो पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड इन दिस यूनिवर्स कैन वर्क विदाउट पावर और परमिशन ऑफ that and Papa I call this is Paramatma you may call it God you may call it but Param means supreme and Atma means soul supreme soul or you can say that's why I'm just trying to say the power of soul आत्मा की शक्ति आपके पास मेरे पास लेकिन हम समझते नहीं हैं हम धर्म में चले जाते हैं हम उस जगह चले जाते हैं जहाँ हम अपने आप को खो देते हैं अपनी आइडेंटिटी से हम नहीं खोना चाहते अपने आप को मैं तो नहीं चाहता खोना आप भी नहीं खोना चाहेंगे क्योंकि आपको सच्चाई जब मिल रही है कि आप खुद कुछ कीजिए तो आगे बढ़िए ये मत सोचिए कि कोई शक्ति आपको अपने आप आगे बढ़ा देगी जो ये सोचते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं वो अलग बात है कि आप अरबपति बन गए पैसा आपके पास है आप समझते हैं मैं किसी को भी खरीद लूंगा लेकिन सच बात तो है आप किसी को भी नहीं खरीद सकते आप मटेरियल तो खरीद लेंगे लेकिन आत्मा नहीं खरीद सकते आत्मा तो मेहनत करने से ही मिलेगी जैसे कहते हैं विद्या आपको पढ़ाई आपको पढ़ने से मिलेगी तपस्या से मिलेगी आपको किसी का आशीर्वाद को यूं कर देता है जाइए आप पास हो गए आपने साइंस पढ़ ली विज्ञान पढ़ लिया सब कुछ पढ़ लिया वो नहीं हो सकता दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इट्स ओनली delusion no god can help you in that case because you have to study yourself and your mind is there to grasp that study and if your mind is not fertile is not sound you can't do that अगर आपका माइंड इतना अच्छा नहीं है पढ़ने में अच्छा नहीं है आप पढ़ नहीं सकते रट्टा जरूर मार लेंगे रट्टा से पास कर लेंगे लेकिन सवाल रट्टे कर रही हैं पढ़ाई में रट्टा काम नहीं आएगा पढ़ाई में समझ कम आएगी जब तक आपको माइंड समझ नहीं पाएगा आप पढ़ नहीं सकते पढ़ने का मतलब स्टडी से है खाली पास करने से नहीं है आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके काम आना चाहिए लाइफ में समझ आना चाहिए अगर आपने समझ नहीं किया आपके काम नहीं आया तो किसी काम का नहीं है जैसे आप मैथ्स पढ़ते हैं फिजिक्स पढ़ते हैं केमिस्ट्री पढ़ते हैं कुछ और पढ़ते हैं सिस्टम पढ़ते हैं जब तक आप उसको अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे आपकी समझ नहीं आएगा आप पास जरूर कर लेंगे लेकिन एप्लीकेशन नहीं आएगी और अप्लाई भी कर लिया मान लीजिए तो उसको एप्लीकेशन को आप नहीं समझ पाएंगे एरर करते हैं माइंड जब तक नहीं चलेगा उसमें आपका वो होगा नहीं और जब आपका माइंड उसमें चल जाएगा तो वो आपका है that work is for you that formula is for you that division is for you that subject is for you that domain is for you if you get it principled in principle you get it not just for purpose of understanding and passing I want to use it I just want the package based if you're behind package then you on package means चलेंगे साथ मिलके कहते हैं ना चलेंगे साथ मिलके अगर हो सका तो we have to go together and who are we here I'm saying I'm not with anybody else here I'm talking about myself that there are two things in myself two articles in myself two vyakti in myself two persons one is my body and one is my soul both are there and soul means mind there is mind and there is soul which are without mind soul cannot exist without soul mind cannot exist mind is that important factor and it's free of cost again and again I say you have not to pay any bill to everyone is supplying you mind means you need not pay anything and आपको कुछ देना नहीं है बिल आएगा ही नहीं आपके पास आप देंगे कहाँ से देने की आवश्यकता नहीं क्या सूरज की रोशनी को आप बिल देते हैं कभी नहीं देते क्या पानी बरसता है उसको बिल देते हैं आप नहीं देते हवा को सांस लेने का बिल देते हैं नहीं देते इस तरह से आपको जब फ्री चीजें मिलती हैं वो मटेरियल नहीं है वो जरूरत है जिसने अपना टॉय बनाया है इंसान जानवर जिसको भी बनाया है अपना खिलौना भेजा है तो उसको चाबी कहते हैं लोग उसको खाना उसने पहले ही दिया है उसको सांस जीने के लिए दिया है उसको बरसात और मिट्टी खाना देने के लिए साथ में सूरज की रोशनी तो वो सब अरेंज उसने करके दे वो चाहता है कि आप जिए वहां जाके लेकिन वो जीना क्यों चाहेगा आपका वो चाहेगा इसलिए कि उस
सिंपल सी बात है, धमकी की बात नहीं है, काम करने के लिए भेजा नहीं, क्या पर्पस है मेरा आपका आने का, आप सोचिए, डू ही जस्ट टू लिव एंड ईट एंड लिव एंड ईट, दैट्स इट, एंड टू मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन, इज दैट, that may be personal, but God's program is altogether different. Every purpose exists for everybody. It's up to you how you understand. If you have to spend this life just for enjoying your life in society and think this is my child and this is further my child or grandchild, I have to live, I must stay in the house and leave the house and I leave my child will use that house. Because this social thinking all over like just like that. But practically what happens when you leave your this world, nobody belongs to you, nobody relates to you, and you came, nobody related to you. Still when you're living, nobody relates to you. Everybody is having his own function, everybody is on, but okay, we say it's a family for purpose of formation, the purpose of survival. You can say it's my family, and this is state is my family, this nation is my family, this world is my plan. We call in our Vasudev Kutum means this whole world belongs to one family. This world is constituted of one family, and just like you are head of this family, there's someone head of this nation and someone the head of this universe. So Saul says something else. Saul is head of everyone. No, it's not. It's your property, a relative property. For time you stay here, and when you go from here, you go into vehicle of soul, and your body is just home for that soul. The soul is staying in this, you are staying in this. The body is temporary here for purpose of because it will diminish one day. Your body came fully worked, it came from your mother's body. It doesn't come from father's body, but father works as an irrigator for this body, and your mother delivers your body, and that body grows up until you live in this world. The day you leave, the body is gone. And but what is that body? It's automatic production. You cannot say that your body is constructed by mechanism of machine or some technology which you know how to. If you know how to manufacture body, it will miraculous scientific development. But so far nothing has happened. No doctor can say, no scientist can say, no one in this world can say how body is manufactured, how that is processed, because this is a process from whole to part. We call there are two issues. One is part to whole and whole to part. And part to whole means you have got many spare parts and just connect them, or machine parts, you connect them and then energize them to becomes a functionary statement. And you can say, oh, I produce this assembly, or you can, this is a car I designed, this aeroplane I designed. Likewise, but God doesn't do that. It comes from one particle to all particles. One particle contains everything in miniature form. Means when two particles join together, means one particle produces this contains everything that will happen in your body, and it goes gradually. And after 9 months, it come out, and that's part means nobody knows how was it produced. And same thing, soul, about soul, nobody knows. So when you don't know about body, how can you know soul? Because soul is master of your body. Soul produces your body. Soul operates process in your body, and that body which the kid has to come. Likewise, even soul is that operates which invisible to us. Body can be green, body can be seen as a delivered, and it's physical entity, biological entity, but soul is neither biological nor physical. And what entity is, nobody knows. Believe me, if people had known what soul is, how it can be produced, they would start producing soul. But even now, you cannot produce water. Unfortunately, we say water has hydrogen and oxygen, H2 and O, but without hydrogen and oxygen, you can't say I produce water. Can you produce water? Elementarily, no, you cannot no longer produce. So why we say materially we may be advanced, but not perfectly advanced. Not we are not in totality we are advanced, but we can say for soul, we even don't know what soul is, what is composition of soul, how it is produced, and what way it is, and we can analyze our soul. We can analyze also. Now that's there's no way you can do it. There may be spiritual science, there may be dharma science, but this don't make anything for us. This is only illusionary, or you can say Brahm, delusion. It gives you, oh, this is my dharma, this is my religion, I believe this, and okay, you believe that this is going to stop you, but you shall not get anything from there, except that the blessings and blessings can solve problems. Yes, blessing and support, because somebody has good thinking about you, or somebody says, okay, I help you, my you what you call say my दुआएं with you, मेरी दुआएं आपके साथ हैं. That is something that's not analytical. Means you can't say okay, that person blessed me and I get success. No, blessings would support your energy, and that's it. But it doesn't matter if you do blessings, you bless yourself. What's wrong with that? Instead of seeking blessings from others, I bless myself. How I can bless myself? You think so? You say, what nonsense is talking this person has got mind? Yes. आप ये कहिए अभी पागल हुए हैं, कैसी बातें करते हैं, अपने आप को कैसे को ब्लेसिंग दे देगा? अपने आप को ही तो ब्लेसिंग दी जाती है. आपकी ब्लेसिंग कहने में नहीं है, करने में है. ब्लेस,
आशीर्वाद अपना लीजिए। आप अपना आशीर्वाद जब देने लगेंगे तो आपके अंदर से आपकी शक्ति आपको आशीर्वाद देगी काम के रूप में, खाली कहने के रूप में नहीं। वो लोग तो कहते हैं लो जी मेरे सर पे हाथ रख दिया, हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जाइए हमने आपको आशीर्वाद दे दिया। ये कोई आशीर्वाद नहीं होता। आशीर्वाद आपके अंदर है। आपके अंदर शक्ति है, साउल है, आत्मा है, शरीर है, ब्लड है, ये सब एक साथ चलेंगे। आपकी आत्मा अच्छी होगी, एनर्जाइज होगी, तो आपका शरीर अच्छी तरह काम करेगा, आपका ब्लड प्रेशर सहेगा, आपको थकावट नहीं होगी, स्ट्रेन नहीं आएगा, और आपका माइंड खुश रहेगा कि देखिए मैं सोच के काम कर रहा हूँ। और जब आप सोच के काम करेंगे तो आप जस्टिफाइड काम करेंगे। आप अगर ऐसे ही काम करेंगे, चलो करके देखते हैं, ओ मेरे को गुस्सा आ गया, मेरी भावनाएं नहीं मानती, मैं तो ये करके मैं करूंगा, मैं इसको पीटने जा रहा हूँ या मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और आप काम करेंगे, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे क्या ये काम हो भी सकता है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। साइंस has such basis which knows system. Science means understanding of system, while non-science means no system, but just move and move and move. You walk and walk and walk, and where you reach, you keep on walking, you reach somewhere, and that is sea. It will depend, right? If you don't know where's the destination, आपको मंजिल पता नहीं है, आप चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, क्या होगा? That is what I am saying. Mind and soul are very important entities in this world. It is for everyone, applicable for everyone, to everyone. You are educated, you are not educated, it doesn't matter if you understand what you have to do. When there were no education, people used to live that time also. Evolution energized world. It is theory of evolution that we have come to this place, this level at this time when we have got all facilities. But these didn't happen in one day. But your time of life is not so short. If you compare, if you use that time, possibility is that you can use it 90%, 80%, 70%, 10%, 5%, or just sleep and eat. It's up to you. If you want to sleep and eat, or if you want to do something for this world, if you do something, you'll get something. Nobody can stop you. Yes, there may be your enemies, your adversaries, your you may say leg puller. So why this person is advancing a lot? He's not talking a lot, but is they doing a lot? Why is doing a lot? This is nonsense. He should talk to us. He should be social. He should come to us, tell us good morning, good evening, tell us, ask us how I am, my family is. This person doesn't talk to me. He has got highest degree of pride in him. He walks like this and like this. He just look at me. People react like this. मुझे नमस्ते नहीं की, मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला, निकल के चला गया। निकल के नहीं चला गया, वो सोच में चला गया। उसने देखा नहीं, सोच के वक्त ये नहीं देखा कि कौन किधर है, क्योंकि वो सोच में मस्त है। आप भी रह के देखिए। घमंड किस बात का किसी को भाई? अगर कोई अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है तो घमंड की क्या बात है इसमें? कोई आपसे कम बात कर रहा है तो इसमें घमंड की क्या बात है? और आप जो ज्यादा बकबक किए जा रहे हैं तो आप क्या दे रहे हैं समाज को? मैं बहुत बोलता रहूं बोलता रहूं बोलता रहूं, बिना मतलब बोलता रहूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, वो नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, वो बेकार आदमी, मैं सही उसको मैंने ये कहा था नहीं किया मैंने। अरे आप अपने बारे में सोचिए कि आपकी अचीवमेंट क्या है। आप जो 6 घंटे से बकवास किए जा रहे हैं, आपने दिया क्या समाज को? आप जो 1.5 घंटे से लेक्चर दिए जा रहे हैं, आपने दिया क्या समाज को, देश को? कुछ आपने दिया क्या? हुआ ये कि आपने यहाँ लेक्चर दे दिया, उसके बाद दूसरी जगह लेक्चर दिया, पिछला भूल गए, फिर तीसरी जगह दूसरा भूल गए, आपको कुछ याद ही नहीं कि आपने क्या बोला। Because when you talk a lot, you loosen a lot. Your memory cells are thrown away, turbulence comes there, these are disturbed, and no settlement happens. But I'm not saying don't talk. Talking and lecturing are different issues. Talking nonsense, talking irrelevant has got no meaning. But if you think of a system and then talk of point to point, understanding wise, logically, formula wise, some system exists, you know that system, science exists, arts exists, commerce exists, that is different. That is not just loose talk. That is just systematic talk, organized talk, structural talk, you can say, and that is very significant one in life of everyone. And that is called study, educational study. System has been designed everywhere in all countries. What system should be there for schooling, for universities,
for engineering, for the medical sciences, for non-medical and non-engineering sciences and systems. This happens. So why say soul is a system? Of course, we do not know how does it work, but it works. Mind is a system, a part of body, but soul is not a part of body. It's an operator of this body. Soul is operator of this body. Without soul, we cannot do anything. We say in our construction world, engineering world, that this is a plant, operation plant, just like thermal power plant, a refinery plant, any production plant or whatever plant or chemical industry. It's all called plants, a facility, major place. It's not like small machine plants, but there are many, many trains of equipments and processing trains, we call them. And there are so many components in this technology also available to operate that. And that technology is operator of that. You can say, what is in charge of that organization or that plant is called operator. So your soul is your plant manager, plant organizer, plant developer, and plant is your body. So your body is a plant, biological plant, and your soul is its owner, its operator. It has to operate it, and you have to take technology from soul and use it for your body development. It happens. It's not just thinking, but it's real thinking. And this thinking, you have to start thinking immediately now if you want to move advance. I'm not saying think according to what I'm thinking. You think according to your way. Your mind doesn't mean your frequency of mind cannot meet my frequency, or your frequency of mind cannot meet the other frequency. But mind is mind, cannot be discarded. Mind is your body's master operator. It controls every part of your body. Energy of mind can go to other parts of body, which sometimes are feeling, sometimes require this energy. Your eyes sometimes are dry, but your mind can help it. And when you use your mind, certainly you'll take water and coffee and tea or some liquid, so that your blood flows and your energy flows through your body, and you'll see your mind and will come back to its state. The eyes would come to wet state, and your body will be groomed again to shining or becoming a state. You call it snow eyes. No, I'm not becoming, I'm not shining. Becoming means shining, or giving signals your body is good fun. But if it's dried one step, oh, your body is looking very feeble, very roughish, If there is says, oh, it's rough and not sheer one. Likewise, I say, I'm not talking of color, I'm talking of intensity of illumination through our body, means how much glare is giving. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी बॉडी में कितनी चमक है, कितनी देर है, ये डिपेंड करता है कि आपके माइंड की प्रेजेंस क्या है. अगर आपका माइंड सोया हुआ है, आप सोने में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, खाओ पिए सो जाओ, तो आपका माइंड भी वैसा ही हो जाएगा, आपकी आत्मा भी वैसी हो जाएगी. आत्मा कहेगी मैं कहाँ फंस गई, आत्मा का कहेगा यार कहाँ आ गए, किस बेवकूफ़ के पास में आ गया, मुझे यूज़ ही नहीं करता है, मैं तंग आ गया, मैं थक गया बैठा बैठा इसका वेट करता करता, मुझे यूज़ नहीं कर रहा है ये व्यक्ति, ये प्लांट, क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं पागल हो गया हूँ, मैं नेट से बाहर नहीं जा सकता हूँ, मैं दूसरे के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि मेरा सिस्टम है. सवाल उठेगा, माइंड सबके पास है, सबके पास, इस चीज को मत भूलना. भगवान ने किसी के भी साथ अनजस्टिस नहीं की है. वो हमेशा सबको बराबर देता है. जैसे सूरज की रोशनी किसी को कम ज़्यादा नहीं देता है, बारिश किसी को कम ज़्यादा नहीं देता है, जहाँ पे देता है. हवा एक प्रेशर के साथ सबको मिलती है. इसी तरह से मिट्टी भी सबको मिलती है, हवा भी सबको मिलती है, सूरज की रोशनी भी सबको मिलती है. ये आपके ऊपर है, आप उसको लें या ना लें. लेंगे तो आपके लिए लेंगे, नहीं लेंगे तो आपके लिए नहीं लेंगे. वो आके फोर्स नहीं करेगा आपको लीजिए. आप शादी जैसे करेंगे तो करेंगे अपने लिए, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे अपने लिए. उतर के वो नहीं आएगा कि शादी कीजिए आप या बच्चे कीजिए आप. ये सब चार्टर दिया हुआ है आपको. ह्यूमन, एवरी एनिमल, everyone has been granted a charter by that sovereign power. I am saying sovereign power because that is ultimate. वर्ल्ड किंग, यूनिवर्स किंग, ब्रह्मांड का राजा, ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड का स्वामी, वो हमें वो सोवरन चार्टर हर एक को देता है, हर व्यक्ति को देता है. आपकी ऑप्शन है, आप करें ना करें. ये मत कहना कि मैंने ऊपर से फोर्स किया था आपको, मैंने आपको सिस्टम दे दिया, आप इस सिस्टम को कैसे रहना चाहते हैं ये आपके हाथ में है. मैं बीच में आने वाला नहीं हूँ. आप अगर एक्शन आएगा, आपका एक्शन आएगा तो रिएक्शन आएगा, आपका एक्शन नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं आएगा. साइंस कहती है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. बट इफ यू डोंट डू, every action has equal reaction, it says, right? Every action has equal reaction. So if your body acts, there shall be reaction to support you. And if your body doesn't act, there shall be no reaction to support you.
आप अगर चाहते हैं कुछ करना तो काम तो आपको चलना तो आपको पड़ेगा। कर्तव्य तो आपका करना शुरू-शुरू में तकलीफ होती है, जब आप आरामप्रस्त हो जाते हैं, यार सोने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो? बच्चे उठते नहीं हैं स्कूल जाने के लिए, ऐसे काम पे जाने के लिए तो उठना पड़ता है सुबह-सुबह या रात को जाना पड़ता है। यार अच्छा था ना और थोड़ा देर से स्टार्ट। लेकिन जब आप काम शुरू करते थे, चाहे कितने भी थके हुए आप क्यों ना हों, वो थकावट शायद 10 सेकंड या 10 मिनट या में चली जाती है और फिर आप उसी नॉर्मल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं कि आप फटाफट काम करने लगते हैं। वो काम चाहे फैक्ट्री में कर रहे हों या पढ़ाई कर रहे हों या कुछ और कर रहे हों या वॉकिंग कर रहे हों, कुछ भी आप कर रहे हों, चाय पिएँगे, दूध पिएँगे, पानी पिएँगे, खाना खाएँगे, कुछ भी खाएँगे, आप काम का आनंद लेंगे, एन्जॉय करेंगे उसको। You shall enjoy your work, and if you cannot enjoy your work, this means that work is not yours. Your work should give you entertainment, should give you happiness, should give you pleasure. And even if you do not know that work, and you know that work, there shall be mixed reaction. Oh, it was too easy. Why I did not do it so far? And when you don't want to do, even it's easy. Oh, what work it is? Let it go to hell. What type of so small work it is for me? Question is work. It's not small work, it's not big work. इससे कुछ नहीं होता। कई बार बहुत सिंपल काम भी बहुत बड़ा होता है और कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत आसान होता है। इसलिए हमको ये समझना होगा कि हमको करना क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा काम कीजिए। आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि मुझे माइंड का यूज़ करना है, वो कैसे भी मैं करूँ, मैं पैसा कमाऊँ या ना कमाऊँ वो एक अलग इश्यू है, लेकिन मेरा माइंड खाली नहीं रहना चाहिए। अगर एक बार आप ऐसा सोच लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है, कोई कहेंगे ये कौन-सी दुनिया की बात कर रहा है, मुझे अपनी माँ को भी देखना है, अपने बाप को भी देखना है, अपने भाई-बहन को भी देखना है, अपनी बीवी को भी देखना है, अपने पति को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है, काम को भी देखना है। आखिर में क्या कहाँ माइंड लगाऊँगा? आपको कुछ नहीं देखना है। सॉल अपने आप बहुत कुछ देख लेती है, याद रख लेना। सॉल अपने आप बहुत कुछ देख लेती है, इस चीज़ को भूलना मत। आत्मा वो शक्ति है जो आपके साथ आपके भगवान की, अल्लाह की, जिसको भी आप मानते हैं, उसकी शक्ति आपको लाके देती है। और सच मानिए कहीं-कहीं केसेस में तो भगवान आपके साथ बैठे होते हैं, आपको पता भी नहीं होता। आपको समझ आएगी? जो मैं थियोलॉजी की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, थियोलॉजी, THOLOGY, दी-लो-जी, दी-आर-जी, थियोलॉजी, जिसको हम कहते हैं अलौकिक दुनिया, दी-आर-जी, और थियोलॉजी वो ज्ञान जो हमें अपने आप नहीं मिल सकता, वहाँ से आता है। ज्ञान तो सारा है वहाँ, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जितना भी है, वो उसके हिसाब से बहुत छोटा है। वो ही तो आपको लेना है और उसको लेने के लिए आपका माइंड आपने विकसित किया है, आपका माइंड आपने एजुकेट किया है, चाहे आपके पास कोई सी भी डिग्री रही हो। माइंड आपके पास है, डिग्री आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई करना आपके हाथ में है, अपने आप होगा, कोई आपको कहेगा नहीं। बचपन में कहना ज़रूरी था, लेकिन अब आप उस वर्ष के हो गए हैं, उस वर्ष, उस आयु के हो गए हैं कि आप खुद समझदार हैं। आपके माइंड को बढ़ाना आपके हाथ में है, कोई बढ़ाएगा नहीं और इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता, खाना-पीना ज़रूर होता है। It is your mind, your power, your soul, and you have to enlarge it to whatever volume you think. There is no limit at all. You can enlarge it to one time, two time, three time, four time, million time, billion time, trillion times, or whatever number of times, or 10 to power 35 times 10 to power 2. Just like I always say, quadrillion good morning, nanillion good morning. Usually I say like this because it has very, very large meaning you can't even imagine. You just search this meaning of millennium, you such a million or nanillion, you'll find quadrillion, you'll find meanings in that in many, many powers, 10 to power this much and that much. Just like if I say millennium, millennium means 10 to power 3003. 10 to power 3003. This means if you write 10 and then you write 3003 zeros, that is called millennium. And what I'm talking is nanillion and quadrillion. They're beyond imagination. Beyond imagination. आपकी कल्पना से पार, बहुत पार, जहाँ आप जा नहीं सकते, लेकिन आपका माइंड जब आप बना लेंगे,
तो आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे और वहाँ पर पहुँच के आप कोई ऐसे-वैसे नहीं होंगे, एक हाई प्रोफ़ाइल की आत्मा होंगे। क्योंकि आपकी आत्मा सोती नहीं है, आपकी आत्मा काम करती है, क्योंकि आत्मा कभी सो नहीं सकती, इसलिए वो परेशान हो जाती है। उस आदमी से जो माइंड का इस्तेमाल नहीं करता है, जो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जो तम्बाकू खाता है, जो गांजा खाता है, जो ड्रग लेता है, जो जो वुमेन फॉक में जाता है या हस्बैंड आदमी फॉक में जाता है, जो भी हो चाहे वो एनर्जी जहाँ आप वहाँ वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके पास सहूल बहुत परेशान हो जाती है कि मैं किस डेविल के पास आ गई, मैं क्या करूँ, मजबूरी है। जैसे हम कहते हैं कि मैं किस कंपनी में जॉब करने आ गया, बड़ा खराब एम्प्लॉयर है, काम बड़ा खराब है। तो उस साल का भी काम आपकी वजह से खराब हो जाता है, उसको खुशी नहीं मिलती। अगर उसको खुशी आप देंगे सॉल को, तो वो आपको 1,00,000 गुना खुशी देगी, 1 करोड़ गुना खुशी देगी। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे, क्योंकि आप तो शराब के नशे में एडिक्ट हैं, आपको तो पीने को चाहिए, आपको एक के बाद एक सिगरेट या बीड़ी चाहिए, आपको नशा करना है, आपको गलत काम कर रहे हैं, आपको ब्लू फ़िल्म देखनी है, आपको कुछ ऐसी चीज़ देखनी है जिसमें आप अपना समय ख़राब करें, आपको जुआ खेलना है, सट्टा लगाना है। ये सब चीज़ें नुकसान जो आपको देंगी, वो खाली मटेरियल का नुकसान नहीं देती, आपकी आत्मा को भी ख़राब करती जाती है। इफ सोल इज़ स्पॉइल्ड, यदि आत्मा ख़राब हो गई, तो याद रखना आप ख़राब हो गए। महाभारत में जुए ने सब ख़राब कर दिया। ध्यान है आपको? जुए में सब ख़राब कर दिया उन्होंने, नहीं तो वो ख़राब होने वाले नहीं थे। मेरा कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब काम ऐसे कीजिए कि आप इन चीज़ों से दूर, आप उतना कीजिए जितना संभल जाए। जैसे रोटी हम खाते हैं, कितनी खाते हैं? भई एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा खाएँगे तो खराब हो जाएगी। लेकिन ये लिमिट माइंड पे लागू नहीं होती, क्योंकि आत्मा मटेरियल नहीं है। सोल इज़ नॉट मटेरियल, सोल इज़ समथिंग एल्स। You cannot even say it is air. No, it is something else. Nobody knows in this universe except that power. And if something is such unknown, it is much more powerful than thorium, uranium. It is much more powerful than all the metals available. Then why don't you understand this point? That you are getting something free, free of everything, and it remains in continuous supply. You need not order it in advance, it is already there. It's up to you. You use it or you condemn it. You don't use it, you let it be there. But remember, you will not gain anything if you condemn it. Your body exists, you enjoy body, but if you used to enjoy, if you used to use your soul power, I think your body should also be different. First of all, you shall always be smart, charming, glaring, thinking mind shall receive everything, and mind shall not only receive everything but also give everything to everyone. It will go on donating soul power to others but in form of virtue of work or whatever else. It will give benefit to everyone who seeks benefit. Nobody will come and take it from me, but you shall have through your work. Oh, this person knows this value. Will you teach? Please, shall you teach me this? You means you shall act indirectly virtual teacher, though you not be, you won't be teacher, but people will try to say, oh, you can teach me this. And when you teach this others means, or somebody will teach you as well. It depends. And you think that your teacher is your God and you are best one because God is teacher. What else do you want? अगर आपको भगवान आपका गुरु बन जाए, आप बना लें, जैसे मैंने कहा ना कि अपने आप के टीचर बन जाइए। अगर आप अपने आप के अध्यापक बन गए तो आपको और क्या चाहिए? आप ही टीचर हैं, आप ही अध्यापक हैं, आप ही साउल रखे हैं, आप ही नॉलेज दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी विद इन योर बॉडी, योर माइंड इटसेल्फ इज यूनिवर्सिटी. Why to go to university when you can manage yourself here using information income? Your income is information. Your X flow is information. Your taxation is information. You're getting everything free of cost. You need not go elsewhere. And you can say you demand something, automatically you'll get it through soul, whatever source it applies in, but a source it resides information, and you'll get that source and get information. And it'll send you somewhere where it's available, it will indirectly, and you go there and get this information. एंड दैट इज वेट इज रिक्वायर्ड. ये हो जाएगा आपके साथ, लेकिन इसके लिए आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगी. क्या कहते हैं हिंदी में, एकाग्रता दिखानी पड़ेगी. एकाग्रता आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ जाइए कंसंट्रेशन, बिल्कुल मत बैठिए. ध्यान लगाइए काम में.
डूब जाइए काम में, सोच में, जब तक आपको उसका आंसर नहीं मिलता जो आपकी प्रॉब्लम है। और एक बार आपको प्रॉब्लम का आंसर मिल गया तो आपकी प्रॉब्लम ही समाप्त हो जाएगी। ये आपको करते रहना पड़ेगा। लोग आपको समझेंगे नहीं, मत समझें। लोगों की समझ भी नहीं आएगी आप क्या कर रहे हैं, मत समझें। लेकिन जब आपके रिजल्ट्स आएंगे सब समझ जाएंगे। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ, आप जानते हैं मैथ्स एक सब्जेक्ट होता है, और मैथ्स वो सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश की वैल्यू नहीं होती, जिसमें किसी और लैंग्वेज की वैल्यू नहीं होती। उसमें वैल्यू होती है तो कैलकुलेशन की वैल्यू होती है, चाहे वो कोई भी मैथ्स हो, एरिथमेटिक हो, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, हायर ज्योमेट्री हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कैलकुलस हो, कुछ भी हो, उसमें मैथ्स की वैल्यू में ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी नॉलेज है जिसमें किसी लैंग्वेज का फर्क नहीं पड़ता, किसी धर्म का फर्क नहीं पड़ता, और माइंड सिर्फ उसको ग्रिप करता है। और माइंड अपने आप में एक मैथमेटिकली ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है। और ये विश्व पूरा, ये ब्रह्मांड पूरा एक मैथमेटिकली डिजाइंड सिस्टम है। हर आवर्स हम बनाते हैं, दिन रात बनाए हैं, सब कहीं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। जमीन कितना बड़ी है, कितना डायमीटर है, जुपिटर कितना बड़ा है, सोलर सिस्टम का साइज कितना है, यूनिवर्स का साइज कितना है, स्टार्स कहाँ लोकेट करते हैं, जमीन की गहराई कितनी है, समुद्र कितना है, ओशन कितना है, ये सब मैथ्स ही तो है। आप समझिए, दुनिया मैथ्स से बनी है। आपका शरीर भी कहीं ना कहीं मैथ्स से बना है। आप देखिए, आपके बॉडी का कोई भी पार्ट कहीं ना कहीं कर्व में है। कर्व का मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरी नाक रेक्टेंगुलर है, मेरा सर ट्रायंगुलर है, मेरा हाथ पेंटागन है, ऐसा तो नहीं है। ये तो जमीन की शेप्स हैं, लेकिन मेरे बॉडी की शेप्स, आपकी बॉडी की शेप्स कहीं ना कहीं कर्व शेप में है। सर्कुलर हो सकती है, कर्व हो सकती है, नाक की लेंथ हो सकती है, हाथ की लेंथ हो सकती है, लेकिन सेक्शन में आप देखेंगे तो कर्व है। आंख भी कर्व है, सर्किल है, जो भी है, जमीन कर्व है। और आपकी जितने भी आइटम्स खाने पीने की भगवान देता है, सब्जी हो, फल हो, जो भी हो, गेहूं हो, कहीं ना कहीं वो भी कर्व है। लंबाई हो सकती है गन्ने की, लेकिन काट के देखेंगे रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ट्राइंगुलर नहीं है, कर्व है। आम भी कर्व है, केला भी कर्व है, काट के देखिए। कहने का पेड़ की आप जो ट्रंक होती है वो कर्व होती है, काट लीजिए। छोटी हो या बड़ी हो वो अलग बात है। कार का पहिया भी सर्कल से चलता है, कर्व से चलता है। ऐसा कुछ है नहीं। और इसलिए होता है कि सब कुछ एंडलेस है, कहीं एंड नहीं है। जमीन के ऊपर रिलेटिवली स्क्वायर हो सकते हैं, रिलेटिवली ट्राइंगल हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जीरो, स्फेयर, ऑल ये सब आता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जीरो का मतलब ये नहीं है कि वो जीरो है, शून्य है, वैल्यू नहीं है। अगर वो जिसके साथ लग जाती है तो उसकी इतनी वैल्यू बन जाती है। Yes, we have to understand this point very clearly. The mathematics is a basic elementary subject, very, very elementary subject without which we cannot do anything. And if you cannot understand mathematics, we lose it a lot. It doesn't mean you qualify mathematics, but understanding something, you go to a shop and buy something. Say, if your kid cannot understand mathematics, or how many rupees I have to pay, or dollars I have to pay, and I have this much paid to him, what money I have to take back, what amount I have to take back, that is very important point. If you understand mathematics, means you can change your mind. Mindset is changed. English is language, German is language. You can say Sanskrit is language. These are not mathematics, but your body is constructed as a machine. Same way, when you design something, say for example, I have to construct my house. I have to design it engineering wise. You cannot simply say get mason and do it. No, I have to see how it works. Means what loads are coming on this, what loads shall come on this, what I have to covered area is there, column, beam, all this we have to design. Theory is there, theory of structure is there. In every field, there's some design. Machine design is there, machine theory is there, electrical designs are the electrical system, how it works, how shall we generate it. In plants, there are so many equipment. Every plant, electrical powerhouse, or whatever else there are plants. So many structures are used for purpose of processing of that plant. That all are designed. So you can say mathematics involves every year. Now we are sending, oh, we are going to moon. You are not going simply because you want to go to moon. The mathematics involved. Mathematical involved is your computer itself. The mathematics, you can binary language access, 0, 1 or binary digits, and these talk in machine language. And same way you can say whatever works here. So calculation is your word. You may hate it or you may not hate. That's up to you. Oh, it's too difficult. Mathematics. Oh, Hindi is better for me. English is better for me. I can't understand mathematics. Means you can't understand only until you don't understand. Time you start understanding because it's analytical subject. It's analysis, not it's not synthetic. Means you have to understand every value. Only then you can use relation between those value, and you can say, okay, 2 plus 2 is 4 and 2 minus 2 is 0. Minus 4 plus 2 is equal to minus 2, and 4 minus 4.
minus 4 square root 12, 4 minus 4 is 0. It happens. This is mathematics. Means 0 works in this, plus works in this, minus works in this, multiplication works in, division works in this, power works in, exponent works in this, minus power works into this. Just for example, we say, oh, this is micron. My micro computer based micro touch is micro technology. It is a nanotechnology. It is. So when you say micro, it's a 10 to power minus 1 over 10 to power 6. So it's projected. It's there in your solid state, or you can say chips. It's 10 to power minus 6 for purpose of storing, but for purpose of projection, it reverses. It becomes 10 to power 6. So that is what works. And zero means balanced point, equal this way positive and this way negative, and likewise we can say. So if you go this way, this negative, but power exists. Negative is also a power. People say negativity is there. Negativity is not bad, I would say. Mind is negative. That's why I'm talking to you. If your mind is positive, you can't talk. Soul is always negative. It's never positive, but it works positively. You know what I said? आपकी आत्मा नेगेटिव है लेकिन काम पॉजिटिव करती है. अगर ये पॉजिटिव होगी तो माइंड में आएगी ही नहीं, क्योंकि माइंड स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, दिखने वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर आते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स से वैसे नहीं है, मेटेलिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये सोल का इलेक्ट्रॉन्स है. सोल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि हमें नहीं पता, ये दिखती भी नहीं है. लेकिन नेगेटिव बहुत बड़ी पावर होती है. हमें ये नहीं समझना चाहिए ओ नेगेटिव एनर्जी आ गई. कोई एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, हमारी सोच नेगेटिव होती है. अगर आप नेगेटिव एनर्जी को खाना सीख लें, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ. अगर आप नेगेटिव एनर्जी को खाना सीख लें तो आपकी शक्ति उस आदमी या उस औरत को खा जाएगी जो आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रही है. खो जाएगी वो दुनिया में आपकी में, एब्जॉर्ब कर जाएंगे आप उसको. अगर आपको नेगेटिव एनर्जी लेनी सीख ली, अगर आपने अपनी जिंदगी में प्रतिकूल काम, प्रतिकूल इम्पैक्ट ले लिए, अपनी जिंदगी में जिसको मैं कह रहा हूँ स्ट्रगल्स ले लिए, तो स्ट्रगल तो आपके सामने कोई वैल्यू नहीं रखेगा. और यार ऐसी मुसीबतें तो जिंदगी में हमारी आती रही हैं, ये कोई मुसीबत है? और जिसने कभी मुसीबत नहीं देखी और लाइफ में मुसीबत आ गई तो वो कहेगा यार मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया, मैंने तो कभी एक एक बार भी तकलीफ नहीं सही, मैं तो कभी पैदल नहीं चला और अब मुझे पैदल चलना पड़ रहा है. बात ऐसी है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. ये नहीं कह रहा कि आपके साथ ऐसा हो. जब तक आप बड़ी कंफर्ट की दुनिया में हैं, आप अच्छे नहीं बन सकते शक्ति के रूप से. कोई भी अच्छी चीज, कोई भी पावर इस विश्व की आपको पकाना चाहती है, आप पकना नहीं चाहते. लोहा और होती है, उसमें से निकाला जाता है, उसको पिघलाया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको घिसा जाता है, उसको ताकत दी जाती है, केमिकल कंपोजिशन होती है. आपको नहीं चाहिए. जब तक आप घिसेंगे नहीं, स्ट्रगल सहेंगे नहीं, आप पकेंगे नहीं, धूप नहीं लेंगे, गर्मी नहीं लेंगे, ठंड नहीं लेंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? बातें कई बार छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन असली होती हैं. हमको हर बात पे एकदम नहीं कह देना चाहिए, आत्मा को समझना चाहिए. आत्मा को इतना स्ट्रांग बना ले यदि हम, कि दूसरा आदमी अगर हमारी आत्मा को काटना भी चाहे तो जो हथियार हमारी आत्मा पे डालेगा वो हथियार ही टूट जाए, तो वो क्या करेगा? यू आर गेटिंग माई पॉइंट? If somebody wants to impact on you by using or throwing onto you some negative energy, and your soul is so strong that it can absorb that negative energy, in that case that negative energy shall become positive energy for you, and that person would suffer who sends to you that energy. What I'm talking is different, you know. I'm talking of something. These tantrics abuse your soul. When they search your soul is very strong, they want to pull soul from your body and they want to use for someone else. It happens. It's energy. It is, you can say, signal energy. They draw signals from your signals and use for someone else, and you got defected.
If you keep your soul stronger, you get Atma stronger and stronger and stronger, then that person shall become mad. What is happening? I impacted that person. I throw this fire onto that person, but that person doesn't matter. That person is happy. They're not worried about this. Now fallen sick and didn't means he wanted to cause accident for you, but didn't fall into accident. That's what happens. इसलिए मैं कह रहा हूँ, your power of soul is very important. Your soul is for your body as well as for your work. Don't think it's only for body. If it is the body, means your body has to use this, but your body requires very, very little quantity of that, not complete quantity, but you're getting it full supply, and God gives you in abundance. Don't worry. Because very few people want to have this. They enjoy life, means just enjoy sleep with women, or man woman sleeps with men, and they enjoy. They waste this, destroy this energy in that way, unlimitedly or massively, and then they get nothing else except sufferings. Okay, childbirth is very important, but childbirth is limited. Means it doesn't mean you all time go behind that foolishness and keep your energies destroyed. That's why I'm saying song is that wealth which doesn't give you anything except power. It goes on increasing. It never diminishes. Your balance sheet is always positive if you're solved. Balance sheet doesn't mean bank balance sheet, but your balance sheet. This balance sheet is never defective. This balance is never negative. You will always be there. Oh, my balance is this much, no problem. I can. You cannot give it to others also. That's true. But you can give benefit through work. You have to work. You have to use it. It's your bank, and you can give it to others through benefits. You can teach them, you can work for them, you can say, okay, I will help you. You can assist them so that they get more and more enhanced in soul energy. And that's where I'm saying, अगर आपको किसी को फायदा करना है, आपका दोस्त है, भाई है, जो भी है, वो नहीं कुछ कर पा रहा है, आप सपोर्ट करेंगे, एक बार दो बार शायद वो आगे चल जाए। जैसे कहते हैं ना, पंप से पानी ऊपर नहीं जा रहा है, पंप पानी नहीं कर रहा है, तो आपको थोड़ा प्राइमर वाटर डालना पड़ता है उसमें प्राइम करने के लिए, उसके बाद वो पंप चल देता है। तो आपको प्राइमिंग करनी है किसी की आगे बढ़ाने के लिए, आप प्राइमिंग कर दीजिए। एजुकेशन प्राइमिंग ही होती है, ट्रेनिंग प्राइमिंग ही होती है, जॉब असाइनमेंट प्राइम जो कहती है, जॉब ट्रेनिंग वो प्राइमिंग ही होती है। एक बार दो बार आपको करके दिखा दिया गया, आपको बता दिया गया कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद आपको करना खुद ही होगा। तो वो असिस्टेंस आप दे सकते हैं, उसके बाद सुपरविजन आप कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, और वो रास्ते पे चला जाएगा। तो यही होती है आपकी कंडोनेशन हेल्थ के लिए। ये भी इसको डोनेशन कह सकते हैं आप, ज्ञान बांटना, लोगों को बताना। उससे बेशक आपको पैसे मिले ना मिले वो इशू नहीं है, क्योंकि पैसा आपके लिए यहाँ नहीं है, आपका पैसा वहाँ रखा है। जब आप चाहेंगे, यहाँ वाला पैसा तो यहाँ रह जाएगा, लेकिन वहाँ वाला पैसा आपके साथ रहेगा। वो वाला पैसा कोई छीन नहीं सकता आपसे, कोई नहीं। यहाँ का पैसा तो आपका यहीं रह जाना है, यार कोई छीन लेगा आपसे, आपसे चीटिंग कर जाएगा, आप रोते रहना, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन ना उसके साथ जाएगा जिसने चीटिंग किया, ना आपके साथ जाएगा जिसने आपको दिया है, आपने उसको दिया है। तो वहाँ जो पैसा आपके पास होगा वो आपका अपना पैसा होगा, उसे ना कोई छीन सकता है। आप चाहें तो किसी को दे दें, वो अलग बात है। कहने का मतलब ये है कि मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकलिटी लाइफ में क्या है, और प्रैक्टिकलिटी लाइफ में यही है कि आप अपने आप को संभालिए, और आप अपने आप को संभालेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ, शायद मैं लिखता नहीं हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने ना स्क्रिप्ट लिखी है, ना पॉइंट लिखे, ना कुछ लिखे, मैं बैठ जाता हूँ। बाद मैंने भी सोचा कि माइंड के बारे में बात करनी है, सोल से लिंक क्या है, व्हाट इज रिलेशन विद माइंड एंड सोल, एंड हाउ दे वर्क, इज डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट डजंट मैटर, बट इट एक्सप्लेन टू यू व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट वर्क, एंड दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट वन दिस लाइफ, इफ एक्सप्लेन समथिंग। एंड मोर ओवर I talk to you, maybe I know you don't like this type of talk, but I don't care if you like or don't like. It will be there on record, and you will use it sometimes. Maybe one time you like it, or I don't know how it's happening. It comes to me, and I don't keep it with me. That's my habit. I don't keep anything with me. I give everything to everybody. It's up to you. It's open to whole world. You want to take. You don't take, don't take. It doesn't matter. But I am disseminating this. It's called dissemination. Means I mean not distribution. Dissemination means whoever want to take it can take it. Doesn't matter. Whoever sitting anywhere in the world, whatever means. If you want to use it, that's why I'm using mixed language. I'm using Hindi as well as English, because Hindi is limited in north of this portion, not even complete India. But English is the part of communication that everybody can understand sitting anywhere, whatever in the world. So it's for everyone. So don't worry about this. What I'm saying is soul. Soul is something everybody has soul in the whole world. Religion doesn't make a difference on this. Your culture doesn't make a difference on this. Soul is a it's item given to you by that power who sent to this earth, and that power is always enriching this, always enriches this. Earth enriches this, sun and the solar system enriches this, the universe enriches this, your mind enriches this, and you are just living for that to improve world.
And this is a part of world improvement, because if you can improve others also, world shall improve. If you help others to do better job, or not to just destroy this world. People are destroying this world, and that's very bad actually. War is a bad item. You can say in this case, war is no good. War is not sanctioned by God, but people just act like devils and they kill others. You have no right to kill others. You even can't have, you don't have right to kill birds and animals, but we will kill each other. For example, wars, killers, no meaning at all. There's no justification for wars, but people keep busy warring, and that's bad. Just like people keep busy destroying and polluting the world. They pollute air. They already polluted air, soil, water, etc. This is not their duty, but they did it, and they fought against God, and they shall have to face punishment when they reach there. Their face punishment certainly means you can't say you have no right to destroy something somebody delivered to you free of cost. You're using this, you're enjoying this, you're destroying, or means you're walking on something and you're breaking that. It's like someone is sitting on a tree branch and you just cut that branch. What happened? Come along, same thing we are doing. We're sitting in this wall and breaking this wall, disintegrating this, or we can say destructing this world, whatever part of this world. That's not acceptable by God. And once you talk like this, think like this, stays come that God talks to you. You understand that? Stage comes when you think like this without any personal interest, without any ambition of getting money. Don't worry about money. Worry about power of soul. And when you reach a stage where you have, you can say, automatically your application goes to God, solve this problem, and God will solve this problem. And a stage comes to you that God can think about you, that you are a genuine person, you have no greed, you have no degree of avarice, you don't want any better benefit for your personal use, you don't want anything for your family use, you are interest free, you have no binding on you except to help this world, which belongs to ownership of that power. In that case, that power blesses you that you are my representative and you have to take care of this on my behalf, and you can become whatever level of God's representative for some work, and that representation goes on enhancing, increasing, getting more promotions. God tries through you. That stage, if you can get, then your CV will be improved. When you go there, you'll find different position for you. Maybe you don't have to come back to this world, or you may go to some other world. It's my contemplation. Maybe I'm not talking like gurus. I'm talking like an engineer. I'm talking like a professional. I'm talking like, you can say, anthropologist, or you can say I'm talking like analyst. I have understood this through conducting analysis about this soul power. In that analysis we apply, we conduct analysis in our work in profession, and particularly in engineering, and I'm sure about other professions as well. Analysis is very much requirement. You study whatever you work, wherever you work in chartered accountancy, you work in profession of other domains like, you can say, chemist shop. There are so many compositions in medicines. Same way, there are so many laws in laws. Your advocate, your judge, you have to analyze every case, you have to analyze every problem. एंड वंस यू एनालाइज दैट प्रॉब्लम, आप जान जाएंगे कि इस प्रॉब्लम में एक्चुअली कितनी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के कितने आंसर्स चाहिए. अगर वो आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं, उत्तर मिल जाते हैं उनके, तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है. फिर आपको क्या करना होता है, उन उत्तर का सीक्वेंस बनाना होता है, उस प्रॉब्लम के आंसर्स देने होते हैं, और उस सीक्वेंस को समझ के उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, समन्वय बनाना. अगर आप अपने जीवन में कोऑर्डिनेशन अपनाएं, समन्वय अपनाएं, एनालिसिस अपनाएं, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, तो आप अपनी विद्या जो आपने ली है, अपने जीवन में जितनी आपने इस स्टडी की है, अध्ययन किया है, वो अध्ययन आप आगे बढ़ाते रहें. ऐसा होता है सॉल की पावर से. वहाँ आपको सॉल किसी ने समझाई नहीं होगी, आपके एजुकेशन में कोई आवश्यकता भी नहीं है उसकी, क्योंकि समझाने वाले तो सब्जेक्ट के बारे में समझाएंगे, जो सब्जेक्ट उन्हें दिया गया है वो आपको उससे बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि एक वर्ष में टाइम इतना नहीं होता है कि सब कुछ समझा दिया जाए. लेकिन जब आप एक बार पढ़ जाते हैं, स्टडी कर लेते हैं, आप किताब को समझ सकते हैं, आप लैंग्वेज को समझ सकते हैं, आप मैथ्स अगर होता है तो समझ सकते हैं, आपका दिमाग काम करता है, कुछ भी करता है. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएँ, आप स्वयं एक यूनिवर्सिटी बन जाते हैं. अपने आप अपने दिमाग को चलाइए, इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लीजिए. मेरी तरह डिसमिनेशन बहुत लोग कर रहे होंगे, बहुत सी किताबें होंगी, बहुत से फार्मूले होंगे, बहुत से लिटरेचर अवेलेबल होगा. आप उसकी रेफरेंस लेंगे तो आपको वैसे ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको समझ आएगा कि मेरी एनालिसिस में जो एनालिसिस किया है,
इसमें मुझे क्या मिल रहा है। जैसे आप डिस्क फ्रेगमेंटेशन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो पहले एनालाइज करता है, उसके बाद डिफरेंस का फ्रेगमेंटेशन करता है। ऐसे ही आपको अपने लिए अप्लाई करना चाहिए कि आपने एनालिसिस करके क्या पाया, व्हाट इज फाइंडिंग ऑफ एनालिसिस। एंड यू नो एनालिसिस इज वेरी वेरी difficult if you do not understand. Analysis tells you what is problem, where is problem, what should be answer. Can you find this answer? Yes or no? And from where? Yes. From where you can find, or you have to do something to find this answer. Analysis वो power है. Actually आपका शरीर भी एक एनालिसिस से बना है। आपका सिंथेसिस जरूर किया गया है, लेकिन उसका बेस तो एनालिसिस है। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो एनालिसिस करके समझी ना जाए। हम जो करते हैं एनालिसिस अपने देश की प्रॉब्लम को, दुनिया की प्रॉब्लम को, हमें सब कुछ ढूंढना पड़ता है। आपको भी पता होगा, सारा प्लान देखना पड़ता है, कितनी रिक्वायरमेंट हमारी है, कितनी हमारे पास है इसकी, कितनी नहीं है इसकी। ये भी एक तरह का एनालिसिस है। क्वांटिफिकेशन भी एनालिसिस है, डिज़ाइन भी एनालिसिस बेस्ड है, थ्योरी भी एनालिसिस बेस्ड है। और आपका शरीर भी, आपका माइंड तो सबसे बड़ा एनालिटिकल पावर है, बशर्ता कि आप इसको यूज करें। माइंड इज वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट गिवन बाय गॉड, बट वी डू नॉट केयर अबाउट दिस. And that is only problem, that we do not care about this. This is basic analysis, and once you start solving, it means you have to do analysis again. And once you start analyzing, your mind shall multiply. Oh, this person is understanding me. Means if I analyze your mind, my mind would say, oh, this person is very nice, is starting my analysis, means I'm very happy to tell him what I am, right? It will start telling you, because you have to start, you initiated, you unlocked your lock, keys in, and you opened it, and you move in. You'll find comfort in the, oh, this is air conditioned mind. Oh, air blower is there. Every facility is in my mind. I don't care for this. I don't feel any pain. I think about this. Oh, I can write something now. I think on, you start scratch something. You write something which will improve later on by editing, and you keep on thinking and thinking. If you don't write on paper, your mind writes stuff in this somewhere and tell you later on you have to do this. So I'm saying means something I can't give name, man. That's why I say power of soul. Power of soul is something which cannot be entitled, but it is measurable power, immeasurable power. That's because there exists no unit for this. Only memories. Memories is not for soul. Memories is for your brain chip. Soul is just energy, like electrical supply goes on. We know electrical laws measure voltage in ampere, but soul, you may say it is voltage ampere, but it is only related. It's only, a kind of delusionary. But just to understand it, because, oh, what voltage your soul is, what's ampere in the frequency, how is the frequency, how many hertz it is sine or cos, or it is, sine waves, or you can say AC. Just we say about this. AC or DC means here actually no AC DC, it's your sound. So कहने का मेरा मतलब ये, कई बार मजाक में भी हमको लेना चाहिए। अब मैं मजाक ही तो कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये मजाक मजाक नहीं है। ये मजाक के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो आपको मेरे को कह रही है कि समझा दो कि इनको समझ आ जाए। जब आप अपना माइंड शुरू कर देंगे तो आप सबसे आगे निकल जाएंगे। याद रख लेना, आप मत सोचना कि आप ये सोचना कि मैं ही सोच सकता हूँ, दूसरा नहीं सोच सकता, जब तक कि आप ऐसे व्यक्ति से ना मिल जाएं जो आपको एनकाउंटर करे, आपके साथ बहस करे। जब आप माइंड की दुनिया में जब आप माइंड की दुनिया में प्रवेश होंगे, तो आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। वो गलत फहमियाँ जो आपने पाली हुई थी, वो वहम जो आपने पाला हुआ था, वो चीज़ें जो आपने पाली हुई थी कि मुझे सब अपने आप मिल जाएगा, वो भ्रम आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा। आप फिर एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर चुके होंगे जहाँ आप सच्चाई जानते हैं, जहाँ झूठ की कोई वैल्यू नहीं है, जहाँ फैक्ट्स का समय आना है, जहाँ ये नहीं कहना कि जाइए हो जाएगा, मैंने कह दिया। वहाँ आप किसी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अब आप एक तरह से विज्ञान की दुनिया में आ चुके हैं। आत्मा का विज्ञान क्यों है, कैसे है, क्या है, सब आपको समझना पड़ेगा। और समझ नहीं आएगा तो आप प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करना आपका अधिकार है, और उत्तर लेना भी आपका अधिकार है। ये बातें जब आपके पास आएंगी, तो आप उस विज्ञान में पहुंच जाएंगे जो विज्ञान, फिजिकल विज्ञान नहीं देता। साइंस भी एक तरह से पावर ऑफ सॉल से चलती है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, इंजीनियरिंग की डिज़ाइन पढ़िए, कुछ और पढ़िए, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़िए, सब जगह साइंस घुसी है, और साइंस का मतलब है पावर ऑफ सॉल। बस एक बात का ध्यान रखना होगा आपको हर समय, भ्रम से बाहर रहना, भावनाओं से बाहर रहना। सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है, भावनाओं से बाहर आप रह जाएं,
हर बात का अगर आप लॉजिक देखें, कारण देखें ऐसा क्यों हो रहा है, आपको प्रश्न पूछने का अधिकार है और प्रश्न का उत्तर अगर आपको मिल रहा है तो आप आगे बढ़ेंगे। और आपको कोई धोखे में रख रहा है तो कब तक रखेगा। जब आप माइंड यूज करेंगे तो आप भावनाओं में जा नहीं सकते। और गलती से चले भी गए या कोई आपको ले भी गया तो बहुत जल्दी आप वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो आदमी कोई भी हो भावनाओं से ज़्यादा देर तक आपको खींच के नहीं रख पाएगा, क्योंकि आपके पास आत्मा की शक्ति माइंड में है। वो आपकी चाहता है कि आपकी आत्मा की शक्ति आपके मन में आ जाए, आपके दिल में आ जाए। शक्ति तो ये सारे शरीर में रहती है, आत्मा की हर अंग में रहती है, तभी तो आप जिंदा हैं। अगर आत्मा की शक्ति आपकी पैर की उंगली में नहीं है तो आप खड़े भी नहीं हो पाएंगे। आत्मा की शक्ति आपकी नाक में नहीं है तो आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। आंख में नहीं है तो आप देख भी नहीं पाएंगे। कहने का मतलब है ये आत्मा पूरी बॉडी में जाती है, लेकिन इसके फंक्शंस दो ही हैं, या तो ये दिमाग से चलाती है या दिल से चलाती है। आपका दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस, एक्विलिब्रियम बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल कमांड करना चाहता है माइंड पे, लेकिन माइंड कमांड नहीं करने देगा दिल को। दिल कमांड नहीं कर पाएगा माइंड पे। दिल को तो माइंड की सुननी पड़ेगी। और अगर आपका माइंड भी कर दिया जाए तम्बाकू खाने से, शराब पीने से, ऐसे काम करने से जहाँ आपको नींद आ जाए, आप सोचे नहीं, तो माइंड को डोमिनेशन नहीं होगी, डोमिनेशन होगी भावनाओं की। और भावनाएं के उसके लिए अच्छी है जो आपको मूर्ख बनाना चाहता है, आपको खामा खा की बातें करके आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो बातें कभी रियलाइज नहीं होंगी, क्योंकि भावनाएं कभी रियलाइज नहीं हो सकती। ज्वार भाटा आएगा, आंधी आएगी, लेकिन आंधी हमेशा नहीं रहती। हमेशा स्टेबिलिटी हवा रहती है, स्टेबल हवा, इक्विलिब्रियम हवा। हल्की हल्की जब चलती है तो अच्छी लगती है, लेकिन जब 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर आएगी तो आपका तंबू उड़ा देती है। तो वही बात है कि जब आपकी भावनाओं में इतने बहेंगे तो आपके माइंड को क्रश कर देगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहेंगे ये क्या किया मैंने। आप भावना में आए, आपको गुस्सा आया किसी लड़की के ऊपर, भावना में आ गए, और उसके बाद क्या। आप सोचिए, आपकी भावना इतनी डोमिनेटेड हो गई कि माइंड को सोचने का मौका नहीं दिया। और जब माइंड ने सोचने का टाइम आया तो आप तब तक समाप्त हो चुके थे और दूसरा व्यक्ति भी समाप्त हो चुका था। बात को थोड़ा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। भावनाएं आपको ऐसे ऐसे काम करा जाती हैं जो जिंदगी भर आपको परेशान करते हैं। आप फिर कल्पना नहीं कर सकते कि उनको कैसे मेक गुड किया जाए। आप उसको मेक गुड भी नहीं कर सकते। नुकसान हो गया तो हो गया। नुकसान आपने किया, अपने लिए किया, दूसरों के लिए किया, सजा भी भुगतनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप भावनाओं में थे। आप माइंड में होते तो वो गलती नहीं करते, लेकिन इंस्टेंटली होता है, कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए होता है। और कुछ फ्यू सेकंड के लिए किसी का दिमाग को रोक दिया जाए तो वो आत्मा उसके मन में पहुंच के उसका नुकसान तो करा ही देगी। ये पक्की बात है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, दिमाग को समझिए। और मेरा कहने का मतलब यही है, पावर ऑफ सॉल जो आपकी है वो दिमाग में रखिए, उसको अपने भावनाओं में मत रखिए। अपने भावनाओं में रखेंगे तो आप बह जाएंगे। जब पीछे से बर्फ पिघल के आएगी नदी में और आप वहाँ रुक नहीं पाएंगे, बराज पे जाके टकरा जाएंगे, या बियर पे जाके टकरा जाएंगे, या डाम पे जाके टकरा जाएंगे, या नहीं भी कहीं टकराए तो मछली आपके ऊपर आ सकती है, या आप समुद्र में जा सकते हैं। कुछ भी आपके साथ हो सकता है। इसलिए भावनाओं पे जब तक आप काबू नहीं करते, दूसरा आदमी बेवकूफ बनाएगा। जो दूसरों की भावनाओं के साथ खेल सकता है वो एक तुच्छ तुच्छ लीडर तो हो सकता है, लेकिन आपका भला नहीं कर सकता। और आपको माइंड को सेट करके जो आगे चलेगा वो परमानेंट लीडर होता है। और परमानेंट लीडर आपको मिलेगा नहीं जिंदगी में, क्योंकि सारे के सारे स्वार्थी लीडर हैं। सबको अपनी देखनी है, किसी की नहीं देखनी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं फिर कहूँगा, अपने माइंड को संभालिए। आपका माइंड फ्री में नहीं मिला। आपने बहुत मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी, एजुकेशन की होगी, स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू कंप्लीट फेज ऑफ योर एजुकेशन। यू मस्ट हैव स्ट्रगल इन योर लाइफ। योर father mother must have spent money on you, and you have must have worked hard to get that education. And that education should be used, it should not be spoiled by some political leader or else.
You have to use that for you. Don't worry about any guru or someone or really preacher, religious preachers. Don't worry. They're all selfish people. They will not give you any knowledge. Your knowledge comes to you from your education. You have to raise questions. Why I'm doing this? What is the reason behind that? How should I do it? And what benefit I'm getting from this? What's outcome? And that outcome should be useful for me. It's not just I'm just wasting time. You should think like that. Only then you can say it's an analytical study. And don't worry, even if you are emotional, sometimes keep that emotional within yourself. Don't show it to others. And if you show it to others, means people shall understand, oh, this is a weak point, he's emotional, I have made him emotional, so I can abuse this person. I can, once he understands, the person understands, you can be used emotionally. And it's difficult for you, in fact, very frank, means you are nowhere near reality. Reality is not there with you, and you shall certainly loosen everything. And that scenario should not happen there. अभी करीब 1 घंटा हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप इतना, आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। 1-1 घंटा भी दूँगा तो आपको ये बात बता दी जाएगी। सॉल इज़ अगेन आई एम सेइंग, सॉल का ख्याल कीजिए। सॉल आपकी है, माइंड भी आपका है। Soul is yours and mind is yours and body is yours and every this world is yours. And so if you increase your soul value, if you enhance your soul, you can start thinking that this world belongs to me and I belong to, I'm honor of this world. When you start thinking that this world is part of yours and you're part of this world, you honor this, your responsibility toward this world to make it more better, not to destroy it. In that case, you should be a different person. Means money doesn't matter that time. Money is something else. I'm not talking so wealth. When you say this world is mine, means then money is yours. Money is just relative currency. It has got a meaning at all. Means it's an exchange of all this material that we have got through power of the soul and power of God within earth. What is hidden inside earth is all material. It's not money. Money is just a currency form to exchange, because you can't exchange barter. You can't say, oh, barter can't be used these days. So what I say is, this world is yours. You're honor this world, and you are honor because you're representative of God. So you have every power. You're representing God, and God helps you, and God stays with you, and God watches you what you're doing. God shall correct you if you make mistakes. But if you become emotional, then God goes away from you. God tries to help you not to be emotional. But okay, momentarily you can be, but don't go into hands of others. Don't go in clutches of others. Otherwise, you will repent for whole life. And that's why don't show your tears to others. You may have sometimes tears in your eyes, but keep it for you only. Don't say to others that if you somebody says to you, "Oh, you have to do this, I want you to do this," try it and still think of again what is that is talking. If that person cannot give you analytical answer, don't go for that. And mind is made for this purpose, and your mind is good for you. It's you to think about this. And if you can think about this, I can do that. That's why I say, I always say, in engineering, I use my life, my career, and analysis. I found very important part. I never said I was never emotional. I was emotional also sometimes. I suffered from that. Once you're emotional, you're trapped with someone, and you have to pay a whole life for that. So analysis, to some extent, is okay in emotion, but you remember, emotion do not permit any analysis. Analysis is permit only through power of mind, and your power is yours. It's not for others. They can benefit through your work. They cannot steal your power. No one can steal your power. No one have your power if you have multi layers of power. No tantric can damage you. No energy can come to you, which you can say negative energy, because I do not consider that negative energy is bad. Impact can be negative, but energy can never be negative, because energy is always negative. You cannot difference between negative and negative. Soul energy is negative. Computer energy is negative. Your body working is negative. Everything is negative. Thinking is negative. It's never positive. So don't hate negativism. Negative is there, but negative in material form is something else. Oh, I lost this money. That is something that I'm not talking about that. I'm talking about negative in universe, negative in soul, because soul itself is a mat of negativism. It is negative energy that is soul form. Electron, we say electron. What is it? Chemicals comes to say electron ionization. We call it when electron goes to other one, means ionization. For that other one becomes ionized. But electron itself has negative charge, proton has positive charge, and neutron has no charge. So it depends on application, where application is used, how it is done. So what I say, we have to be very careful about this. We have to think how it works, and it's important one. So be careful. Don't worry about this.
Life is yours, soul is yours, mind is yours, body is yours, thinking is yours, concentration is yours. You can say you have to make everything out of that. And if you cannot make out of that, it's long journey, it's not short journey. And you have to make your life easy and powerful. That should be your aim rather than just running for this. You do not know where you have to go, and you do not know where you may select five destinations, you can achieve none, but you don't know what's confirmed destination, and that is very important. So I'll close it now for the time being, and see you again tomorrow. Enjoy your mind. By that time I'll come back with Solomon again. That's it.